Hello everyone, my name is Aastha. I welcome you all to our classes for the International English Olympiad for class 9th. This is our 14th class in the series and today our topic is articles. Articles can be pretty tricky if you don't know the fundamentals, the basics. So watch this class carefully to get your basics cleared and so that you don't make a mistake in them. Alright, let's get started. So what are articles? सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल्स होते क्या हैं? Article is a word that combines with a noun to specify the type of reference to the noun. Oh my God, ये क्या मीनिंग दे दिया? बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आप इसका बेसिक मीनिंग समझते हैं, फिर हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये मीनिंग क्लियर हो जाएगा. An article is a word that combines with a noun. ये तो समझ आ गया कि जो आर्टिकल है वो नाउन के साथ यूज होगा. To specify the type of reference to the noun. To specify the type of reference to the noun. मतलब आर्टिकल जो वर्ड है वो नाउन के साथ यूज होगा और स्पेसिफाई क्या करेगा? Type of reference to the noun. ये रेफरेंस होगी दो तरीके की. One could be specific. Okay, and the other could be general. ये जो दोनों रेफरेंसेस हैं हम समझेंगे कि कैसे कैसे आर्टिकल्स में यूज होती हैं. तो एक चीज हमने समझी कि ये नाउन के साथ यूज होगा एंड दूसरा ये हमें बताएगा रेफरेंस. रेफरेंस मतलब कि या स्पेसिफिक है या जनरल है. ओके, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए लेट्स स्टार्ट. नाउ देयर इज अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स जो पहले हम पढ़ेंगे और उनके हिसाब से एग्जांपल्स लेंगे. ए एंड द बहुत इजी है, बहुत बेसिक है एंड ओनली 3 एग्जांपल्स वी हैव. ए एंड द. सबसे पहले हम करेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल्स. दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं. फर्स्ट इज इनडेफिनिट, सेकंड करेंगे हम डेफिनिट. तो पहले हम करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स. ऑलराइट, ए एंड एंड. 3 आर्टिकल्स हम पढ़े हैं, ए एंड द. तो इसमें से ए एंड A and an. Both of these are indefinite articles. When are they used? They are used when we do not refer to any particular person or thing. मतलब किसी भी particular person या thing में जब refer नहीं कर रहे. Which means generally. जब हम किसी भी general पर्सन या थिंग की बात कर रहे हैं तो हम ए या फिर एन यूज करेंगे. कैसे वो हम एग्जांपल्स में समझेंगे. Alright, so the first type of articles, for the indefinite articles, we are going to study now the words which are singular, which are countable nouns, and they begin with a consonant sound. क्या आपको देखने में लग रहा होगा कि इतनी सारी कंडीशंस याद कर रखनी पड़ेंगी, पर ऐसा नहीं है. हम एग्जाम्पल समझेंगे तो यू विल सी हाउ इजी इट रियली इज. Okay, so here you see he is a policeman. Here the article being used is a. Now let's see why is a being used. You see the noun. The noun here is
Singular. Singular matlab it is only one policeman that we're talking about. We're not talking about multiple policemen, right? Singular ho gaya. Then it is countable because you can count the policeman is only one. And consonant sound because per starts per, that this sound is a consonant sound. So we are using a. Okay. Then she doesn't own a house. What are we using a for? We are using it for house. And house is singular because we're just talking about one singular house, one particular house. And it is countable also. And then it begins with a consonant sound. House begins with the sound her, and her is a consonant sound. So all the three conditions. So now it is we are using a here. Then similarly for the third example, it says I have a pen. Now pen, it is for the noun pen for which a is being used. Pen is singular, only one single pen. It is countable and it begins with a consonant sound. Starts with per. Per is a consonant sound. So we are using a here. समझ गए कि जब singular हो, countable noun हो और consonant sound हो तो हम क्या use करेंगे? A. Now let's see the next conditions. Okay, so here in the next formation we have singular, जब singular word हो, countable noun हो और vowel sound. You see, उसके हम examples लेते हैं. Single and countable noun तो same है, बस हमें देखना है vowel sound क्या होती है. First example says I am an actress. So जब देखो जब सिंगल हो, काउंटेबल नाउन हो और वॉवल साउंड हो तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? An. Okay. I am an actress. Actress. Actress is a singular noun. We were only talking about a single actress. It is a countable noun and it is beginning with a vowel sound. Start हो रहा है actress. A जो sound है that is a vowel sound. So vowel sound. So we are using an. Okay. Next, he did not get an invitation. Invitation को देखना है. Invitation जो है वो singular है, countable है और vowel sound है. Vowel sound कैसे है? Invitation. A is a vowel sound. So it is starting with, so we are using the article an. Okay. Now the third example. She had an infection. हम यहाँ पे देखेंगे अपने word infection को. It is singular. We are talking about one infection. We are talking about a countable noun. And infection starts with I. So this one again starts with a vowel sound and we will be using the article an. तो हमने देखा कि जब singular हो, countable noun हो, vowel sound हो तो हम यूज करेंगे an. और पिछले में जब single था, countable noun था, पर जब consonant था. तब हमने क्या यूज किया था? Then we used a. अब vowel के लिए we have used an. Right? I hope it is clear. Let's move on. Okay, so the next category is in agreement with adverb or adjective if any. Now this one means अगर कोई adverb होगा या कोई adjective होगा तो हम उसके reference में कोई
उसके रेफरेंस के साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे. ओके, सो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव्स क्या थे और एडवर्ब्स क्या थे. क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम. एडवर्ब्स क्या थे? Adverbs were the words which answer the questions like which answer the questions of. There were these 5 questions. If you remember, just write them down. When, where, how, often, and to what extent. Okay, these were the questions which were being answered by adverbs. And adjectives. Adjectives were what words? Adjectives were the words which describe something. Okay, so अगर कोई adverb आएगा या adjective आएगा तो हमारे articles कैसे use होंगे? Let's see that now. Just erase this. Okay, so these are the examples. Now in examples में हम adverb और adjective करने से पहले let's do one thing. These are these 2 examples. अब इन एग्जाम्पल्स में आप ये दोनों हटा दीजिए और यहाँ पर भी ये हटा दीजिए. ठीक है, और सोचो कि यहाँ पे एक ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक है. तो अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज होगा. दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वी डिड इन प्रीवियस स्लाइड एज वेल. आई एम डैश एक्ट्रेस. Actress जो है, it is a singular, it is a countable noun, but it is beginning with a vowel sound. Vowel sound. Actress, a. That's a vowel sound. So यहाँ पे the article used will be an. Right? अब the next example. He did not contract dash disease. Now here disease के पास हमें article use करना है. So disease is singular, it is countable, but it is beginning with a consonant sound. And the ones which begin with the consonant sound, we use the article a. Right? But now you have to notice the difference. यहाँ पे हमारे पास a young and an infectious है. तो अब यहाँ पे articles कौन से use होंगे? यहाँ पे जब हमारे पास ये वर्ड आ जाता है young. Young क्या है? एक adjective है. Why is it an adjective? Because you remember we learned that adjectives are the words which describe something. And what is this word young describing? It is describing the actress. Actress. So young is an adjective. And now young is beginning with a consonant sound. Here. So here we will be using the article a. तो जब हमारे पास adverb या adjective हो तो हम sound जो देखेंगे वो हम देखेंगे उस adverb या adjective की. जो noun है उसकी नहीं, जो adverb या adjective से पहले आ रहा है. Alright? Similarly, in the second example, we have an infectious disease. Now here the adjective is infectious because it is describing what? It is describing the disease. यहाँ पे भी we will be using the article an. Why? Because infectious, it starts with a vowel sound. Infectious. A. Right? So ऐसे ही हमने देखा कि अगर यहाँ पे adverbs और adjectives नहीं होते तो हमारा completely opposite होगा. यहाँ पे हम an use करते और the second one में हम a use करते. But यहाँ पे because adverb या फिर adjective है, so we are using a and an. क्यों?
क्योंकि we will be seeing the sound of the adverb or the adjective and not the noun. All right. I hope you have understood. Now let's move on to the next category. So the next category tells us sound is important, not the letter. Okay. Now, you see sound is important, not the letter. This one means, हम example से देखते हैं. जैसे you see this. यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि हम जब कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट जब कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो और जब वॉवल साउंड हो. जब कॉन्सोनेंट साउंड हो तो वी यूज अ, एंड जब वॉवल साउंड है तो वी यूज एन. अब आपको रिमेंबर करना है कि यहाँ पे हम साउंड की बात कर रहे हैं, लेटर की नहीं. मतलब कोई लेटर ऐसा भी है जो कॉन्सोनेंट होगा और उसकी साउंड वॉवल की होगी, या फिर कोई वॉवल होगा पर उसकी साउंड कॉन्सोनेंट की होगी. लेट्स सी द एग्जांपल्स. यहाँ पे आप देखो, शी इज अ यूरोपियन सिटीजन. नाउ यूरोपियन, यूरोपियन जो है इट इज स्टार्टिंग विद एन ई. नाउ ई इज अ वॉवल, ई वॉवल है पर इट इज अ वॉवल, बट इसकी जो साउंड है इट हैज अ कॉन्सोनेंट, has a consonant sound. वॉवल होते हुए भी साउंड कॉन्सोनेंट की है. यूरोपियन, इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो हम यहाँ पे अ यूज कर रहे हैं. ओके. सिमिलरली फॉर ही गोज टू अ यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी ऑल्सो, यूनिवर्सिटी इज बिगिनिंग विद अ वॉवल, बट जो साउंड है यूनिवर्सिटी दैट इज a consonant sound, so we will be using article a. Then next examples, next set of examples, you see I will reach in an hour. Here r जो है this is starting with the consonant, but जो sound है वो vowel की है. An R is a starting with a vowel sound, so we will be using the article an. Similarly, she got an F in her exam. An F है तो हमारा consonant, पर sound क्या है? F. A से start हो रहा है, A is a vowel sound, so we will be using the article an. All right. I hope you have understood कि हमें साउंड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एंड लेटर नहीं. लेटर तो वॉवल भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, पर उसकी साउंड उससे ऑपोजिट भी हो सकती है, तो हमें साउंड पे ध्यान देना है. ओके. ओके. सो हम जब इनडेफिनेट आर्टिकल्स के लिए पढ़ रहे हैं तो ये हमारी लास्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वी ओनली यूज देम फॉर सिंगुलर एंड नॉट प्लूरल. ठीक है. देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने. आई सॉ अ bears in Yellowstone नेशनल पार्क. अ bears s, दिस इज प्लूरल. सो जैसे कि हमने शुरू में भी पढ़ा था कि जो हमारे indefinite articles हैं, we only use them for singular and not for plural. ये plural है तो यहाँ पे नहीं यूज होगा, यहाँ पे अ नहीं यूज होगा. दिस इज इनकरेक्ट. बट जब है I saw bears in Yellowstone National Park, so bears में there will be no article used.
राइट। अगर सिर्फ अ bear होता, it would have been bear. I saw a bear. तो हम अ यूज करते. ओके, दिस इज इजी. Now let's move on to the next category. Okay, so now we are moving towards the next category of articles. हमने अभी पढ़े थे indefinite articles. Indefinite. Those were the ones which were एक था a and the other one was an. यहाँ पे अब हम करेंगे second category of articles which is definite articles, and the only article we have in this category is the. The कब यूज होता है? When we are referring to any particular person or thing. जब हम specific बात कर रहे हैं, definite चीज की बात कर रहे हैं, specific. हमने देखा था ना indefinite में कि हम किसी general चीज की बात कर रहे हैं, पर यहाँ में हम एक particular person या thing की बात कर रहे हैं. Alright, let's see the examples. Now you see when it is used, when the is used. First, it is used to talk about people and things we have already mentioned. देखो example. She's got 2 children, a girl and a boy. हमने पहले बताया कि she's got 2 children, a girl and a boy. हमने generally बताया कि एक लड़का है, एक लड़की है. पर हम जब उन्हीं गर्ल एंड बॉय के बारे में दोबारा बता रही हैं, जब वी आर मेंशनिंग देम अगेन, सो व्हाट आर वी यूजिंग? वी आर यूजिंग द बॉय, मतलब वही पर्टिकुलर बॉय 14 है और वही पर्टिकुलर गर्ल शी इज 8. ओके, सो इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट पीपल एंड थिंग्स वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, जब हम उन्हीं को रेफर करते हैं दोबारा. सेकेंड कैटेगरी, व्हेन वी आर सेइंग which people or things we mean, जब हम किसी को particularly point out करके बता रही हैं generally. तो जैसे यहाँ पे example है, who's the girl in the car over there with John? हम एक particular लड़की की बात कर रही हैं, एक लड़की है जॉन के साथ कार में, तो who is the girl in the car over there with John? Okay, the girl, the car, specifically बात कर रहे हैं, कोई रैंडम बात नहीं हो रही. यहाँ पे हमें स्पेसिफिक गर्ल के बारे में बात कर रही हैं, पॉइंट आउट करके. थर्ड, व्हेन इट इज क्लियर फ्रॉम द सिचुएशन व्हिच पीपल और थिंग्स वी मीन, मतलब जैसे कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट. अब जो टेबल है, टेबल पे यू नो देयर इज सॉल्ट पेपर के जो बॉक्सेस होते हैं, से could you please pass the salt, तो हम specifically salt की ही बात कर रहे हैं. It is clear कि which salt we are talking about, which thing we are talking about. So the salt. Okay, the is very easy. Now next, okay, now when there are few more categories, कहाँ the use होता है. थोड़े एग्जाम्पल्स हैं आपको समझाने के लिए. जैसे यू सी सुपरलेटिव्स. सुपरलेटिव्स जैसे हमने पढ़ा था एडजेक्टिव्स में होते हैं थर्ड डिग्री, जब हम बताते हैं कुछ हाईएस्ट लेवल या लोएस्ट लेवल. तो यहाँ पे जैसे हम कह रहे हैं एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. द हाईएस्ट माउंटेन, सबसे बड़ा, मतलब एक ही तो हाईएस्ट माउंटेन होगा, 2 हाईएस्ट माउंटेन तो नहीं हो सकते ना. तो हम एक स्पेसिफिक उसकी चीज की बात कर रहे हैं which is the highest mountain. So we will be using the article the here. Okay. Now next, inhabitants of a country.
नाउ हियर द एग्जाम्पल, इनहेबिटेंट्स होते हैं जो किसी कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं, जैसे ब्रिटिश, जैसे इंडियन, द इंडियन पीपल, द इंडियन लिव इन इंडिया। वैसे ही द ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश तो एक ही कैटेगरी, हम स्पेसिफिक लोगों की बात कर रहे हैं, तो इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्री के लिए भी हम द यूज करते हैं। होली बुक्स, क्योंकि होली बुक्स जो होती हैं रिलीजन की एक ही होती है, देयर इज ओनली वन बाइबल, राइट, सो वी रेफर टू इट द बाइबल। द भगवद गीता, द कुरान। नेचर के लिए द अर्थ, द सन, द स्काई, द स्टार्स। रिवर्स भी एक देयर इज ओनली वन गंगा, वन कृष्णा, and the Thames, all these rivers, this is only one river, the Ganges, the Krishna, the Thames, okay, then seas and ocean, ये भी सिर्फ एक एक चीज ही है ना दुनिया में, so the Arabian Sea, the Pacific Ocean, mountain chains, again Himalayas की एक ही mountain chain है, so the Himalayas, the Andes, the Nilgiris, okay. Monuments, again there is only one Taj Mahal in the world, so इसको हम specifically point out कर रहे हैं, the Taj Mahal. And then the Red Fort, we have the Eiffel Tower, we have the President, the Prime Minister, the अब musical instruments के लिए we will refer to it the violin, the guitar, the flute. For directions as well, हम point out जब करते हैं directions के लिए, then again we use the east, the north, the south, the west. Countries with plural names, the Philippines, the West Indies, जिससे और हम कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके। देन वर्ड्स सच एज लास्ट एंड नेक्स्ट, द लास्ट फेज, द नेक्स्ट कैंडिडेट, एंड ऑर्डिनल नंबर्स के लिए भी द फर्स्ट एडिशन, द सेकेंड रो। देखो फर्स्ट एक ही होगा, लास्ट भी एक ही, सेकंड भी एक ही होगा, इधर लास्ट भी एक ही होगा, नेक्स्ट भी एक ही होगा, तो हम सिर्फ स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। यहाँ पे हर जगह आप देखोगे कि हम जब स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग द वर्ड द, ओके। सो ये थे फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द, नाउ लेट्स मूव ऑन। Okay, so now we have the final revision for the article usage flowchart. अगर आप ये आर्टिकल का जो फ्लो चार्ट है ये आप समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कोई भी आर्टिकल लगाना। Let's see. Now, first question you ask yourself is, what kind of noun am I describing? अब ये देखते हैं कि अगर हम एक स्पेसिफिक आइटम डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसके 3 कैटेगरीज हैं। इसमें अगर हम फर्स्ट कैटेगरी लेते हैं कि इफ आई एम डिस्क्राइबिंग वन स्पेसिफिक आइटम, तो अगर तो ये नाउन, मास नाउन है या प्लूरल है, तो प्लूरल में हम क्या यूज करेंगे, द। अगर कोई स्पेसिफिक आइटम है और सिंगुलर है तब भी हम द यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक आइटम है। स्पेसिफिक आइटम जब सिंगुलर होता है तो वी यूज द, ऑलराइट। पर स्पेसिफिक आइटम अगर प्रॉपर नाउन है तो हम द नहीं यूज करेंगे। जैसे इफ आई रेफर टू माय नेम, आई से गिव दिस पेन टू आस्था। आस्था इज अ प्रॉपर नाउन, राइट। आस्था स्पेसिफिक भी है, पर यहाँ आस्था प्रॉपर नाउन है तो हम ये नहीं बोलेंगे गिव दिस पेन टू द आस्था, वी विल जस्ट से गिव दिस पेन टू आस्था, ओके। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, सो नन।
Now next category. Next category है one out of many. जब हम one item out of many describe कर रहे हैं तो या तो plural है तो कोई भी नहीं यूज होगा, पर अगर वो singular है अगर वो consonant से start हो रहा है तो we will be using a consonant sound. Remember consonant sound. अगर vowel sound से so we will be using an. Then third category will be which is one which represents all cases everywhere. Which kind of noun? We are describing the one which represents all cases everywhere. अगर plural है तो कुछ नहीं, पर अगर singular है तो we will be using the. Okay? क्योंकि ये जो है this is representing all the cases everywhere. ये एक specific है जिसका कोई alternative नहीं है. It is being representing everywhere the same. So the. This is the article usage chart. Alright, so now we start off with the questions on articles. Here the question says, fill in the blanks with the most suitable articles. Pretty easy. We'll read the sentence given and we will see these blanks. Whichever combination of articles fits in from the blanks, we'll choose that. Okay. So here we have ignorance is a bliss and dash ignorance of Miranda was really astounding. Okay, so here you see we are talking in the first blank. Let's see, we're talking about ignorance. Ignorance is what? An abstract noun, and for the abstract nouns, when we're talking in general terms, we do not give any article. Like here it's a saying that ignorance is a bliss. Okay, so for here we are not going to give any reference, we're just talking in general terms. So here no article. But then we say ignorance is a bliss and dash ignorance of Miranda was really astounding. So here you see we're talking about ignorance of Miranda. Ignorance of Miranda is a very specific thing. Okay, a very specific reference we are giving here. So here we'll be using definite article the. Okay, and the ignorance of Miranda was really astounding. So the correct answer is B. Ignorance is a bliss and the ignorance of Miranda was really astounding. Alright. Okay, here we have, we were admiring dash beauty of Cleopatra, but my friend said dash beauty is skin deep. Here again, if you would take inference from the previous question, here we have first blank. Are we giving a general reference or a specific reference? Here we are saying we are admiring dash beauty of Cleopatra. We are talking about the beauty of Cleopatra. Okay, so we are talking about we're talking in very specific terms. Okay, and beauty is an abstract noun again. So for abstract noun and then the specific reference we use the. So we were admiring the beauty of Cleopatra, but my friend said dash beauty is skin deep. Now here again, this is a saying. Beauty is skin deep. Beauty is skin deep is a proverb which means that we should not judge someone from their physical appearance. It's their personality and it's their character which actually matters. So again here we have an abstract noun beauty, and here we will be giving no article. No article. Why no article? Because again it's the saying. हम कोई reference नहीं दे रहे हैं. Abstract noun we are using in a general term, so no article. So here we have, we were admiring the beauty of Cleopatra, but my friend said beauty is skin deep. Alright. Okay, next up we have, in scientific experiments, dash accuracy is essential and John could not judge dash accuracy of the calculations. So if you see, these questions are on the similar lines where there's going to be one blank in which a specific reference is given and second blank a general reference is given. Let's see how in this one. In scientific experiments, dash accuracy is essential. So here, until here you see, here this is again a saying a certain general truth we are talking about. Okay, and here for accuracy we're just talking in general terms. We are not specifying, we are not giving any reference, we're just talking in general terms. So we'll just say, in scientific experiments, accuracy is essential. So no article. But then when we say,
and John could not judge dash accuracy of the calculations. Here, accuracy of the calculations, we are giving a specific reference. He could not judge the accuracy of what? So, again, we are giving a specific reference for an abstract noun accuracy. So, here we will be using the definite article the. The correct answer is C. In scientific experiments, accuracy is essential and John could not judge the accuracy. Okay, next up we have water is necessary for dash life, but dash life of these insects does not depend on water. Okay, here again in the first blank you see what we are talking about. Water is necessary for dash life. Here we are just talking generally in stating an obvious fact, and here life, the word which we have here life के लिए हम कोई specific reference नहीं दे रहे हैं, हम बस general terms में बात कर रहे हैं. तो when we are talking in general terms, we do not use any article. So we just say water is necessary for life. Okay. Then we say, but dash life of these insects does not depend on water. So here you see, here हम life किसकी life की बात करें, किसी specific life की? Yes, we are talking about the specific life of insects. That's why we give a specific reference and use a definite article the. So the correct answer is B. Water is necessary for life, but the life of these insects does not depend on water. The correct answer is B. Okay, here we have dash Amazon is dash longest river in the world. Okay, now as we read, for the Amazon is the name of a river, and for names of river, mountain peaks, islands, names like these, what do we use? A definite article the. So the Amazon is dash longest river in the world. Now here also we are talking about superlative, longest. Okay, longest river in the world. Superlative हम use कर रहे हैं. Superlative के लिए, as I told you, again we use the. So the Amazon is the longest river in the world. Correct answer is A. Okay, here we have, I saw dash 1 rupee coin lying on dash ground. Okay, so here 1 rupee coin, single countable noun, and here starts with 1. Now 1, although it starts with a vowel, but sound is consonant sound. Okay, so although it starts with a vowel, but since we have a consonant sound, so we will be using a, not an. I saw a 1 rupee coin lying on dash ground. Lying on the ground. Ground के लिए हम एक specific reference दे रहे हैं. So you saw it on a particular ground, right? So I saw a 1 rupee coin lying on the ground. All right. Okay, next up we have Tom belongs to dash United Kingdom, but his wife hails from dash India. Okay, now both of these, they are names of countries, but here for United Kingdom, you see, for United Kingdom, since the name is United Kingdom, all right, and so for countries like United Kingdom, and this is, its name is actually plural, and we have United States of America, or we say Philippines. These are, names, their name is inherently plural. That's why we use Tom belongs to the United Kingdom, but his wife hails from dash India. Now India, we're giving India again, name of a country, but it's not inherently plural, so we don't use any article here. So Tom belongs to the United Kingdom, but his wife hails from India. Alright, so the correct answer is C. Alright, so that's all for our class on articles. I hope you have understood the basic differences between definite, indefinite, when to use which article, when not to use an article. So I will see you the next time. Keep revising, keep learning. Thank you.